Good morning, children. 11th Science. Today we are going to revise the lesson 3, that is classification of elements. Okay. So first I will tell you, some students get confused. What is ionization enthalpy? Ionization. What is ionization enthalpy? Okay. So the minimum amount of energy. Ionization enthalpy means energy. Ionization means to make it ion. So the minimum amount of energy required to remove क्या रिमूव करेंगे? द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन. कौन सा इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट? द मोस्ट लूजली, यू अंडरस्टूड, बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. बेटा ये टर्म नहीं भूलना है. फ्रॉम एन आइसोलेटेड gaseous atom to convert in a gaseous cation so as to convert it in gaseous cation. इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो क्या होगा? गैसियस कैटायन बनेगा. इज कॉल्ड ionization enthalpy. First electron will be removed, then it is first ionization enthalpy. Second electron will be removed, then it is second ionization enthalpy, and it is denoted by, अगर इसको ऐसा हम लिखें, m gas plus delta IH is equal to, यानी ये ionization enthalpy energy is given, then m plus ion and one electron will be removed. In this way it is written. ठीक है? Where m gas and m plus gas are gaseous ion and gaseous cation. This is gaseous atom and this is gaseous cation. So what is successive ionization enthalpy? एकदम easy है बेटा. The first ionization enthalpy, यानी first electron is removed. Second ionization enthalpy, यानी second electron will be removed. Third and so on. So we will write the ionization enthalpy. The ionization enthalpy required to remove first, second, third and so on. First, second, third, etc. कर दो and so on. Electrons from an isolated gaseous atom are called successive ionization enthalpies. Successive ionization enthalpies. ठीक है? They are denoted by, अगर हम मैं ऐसा लिखूं, delta IH1, delta IH2, delta IH1 first ionization enthalpy, second हो गया delta IH2, third हो गया delta IH3 and so on. इस तरह से इसको एक्सप्रेस करते हैं. हमेशा ऐसा देखा गया कि delta IH2 is always greater than delta IH1 and delta IH3 is always greater than delta IH2. So what is the explanation?
ध्यान से समझना, डेल्टा आई H3 will be greater than delta I H2 and this will be greater than delta I H1. तो ऐसा क्यों होता होगा? what could be the explanation? Reason is, तुम 3 फ्रेंड्स हो, उसमें से मैंने एक फ्रेंड को अलग कर दिया, सो बाकी के 2 फ्रेंड्स एकदम अच्छे बॉन्ड में बंधे रहेंगे, नहीं तो वी ऑल्सो विल बी सेपरेटेड. So same thing happens with the electrons. When one electron has been removed from the neutral gaseous atom, the positive charge ion formed has 1 electron less than the number of protons in the nucleus. So what will happen? Electrostatic attraction between nucleus and remaining electron in the cation will increase. Or when it will increase, the effective nuclear charge increases. So positive ion, when first electron is removed, then more number of proton, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो more number of proton will attract less number of electrons, ठीक है. So that means effective nuclear charge will be more. मेरी बात समझ में? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया लेकिन प्रोटॉन तो उतना ही है, तो नाउ प्रोटॉन्स हैव टू अट्रैक्ट लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, है ना. एंड that holds the remaining electrons more firmly. That holds the remaining electron more firmly. ज्यादा होल्ड करेगा अच्छे से. Therefore delta I H2 will be more energy will be needed now to remove the extra electron. Delta I H2 will be greater than delta I H1, ठीक है. So delta I H2 will be greater than delta I H1. Similarly सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो और भी 2 इलेक्ट्रॉन लेस हो गए, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया. मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन will increase less number of electron. So therefore delta IH3 will be greater than delta IH2 and delta IH2 will be greater than delta IH1. Okay. So there is one interesting question, beta. This question you have to keep in mind for competitive exams. In our book, if this question is not given, calculate the energy required to convert all atoms of magnesium to magnesium ions present in 24 mg of magnesium vapors. ठीक है. And delta IH1 of magnesium is given and delta IH2 of magnesium is also given. So what we will do in this question, according to definition, what we will write here, mg, solution लिख दो, mg gaseous. ये हमेशा याद रखना कि आइसोलेटेड गैसियस एटम से ही आयन बनेंगे. सो गैसियस प्लस डेल्टा IH1, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड is equal to mg. So 1 electron is removed, so mg plus will be there, and gas plus 1 electron, and here delta IH1 is equal to, value of delta IH1 is equal to 737.76. Similarly here mg, second electron will be removed, plus delta IH2 will give mg2 plus, and 1 more electron will be there. Here delta IH2, यहाँ 1 लिखना, is equal to 1450.73. It is given in the question only, so we have written like this. So total amount of energy to convert mg to mg2 plus, what will be there? We will write here total amount of energy to convert mg gaseous to mg2 plus ion. Okay,
इज, दोनों एनर्जी को ऐड कर दें, 737.76 प्लस 1450.73. So let us add this. 737.76 plus 1450.73 is equal to 2188.49. ठीक है, फिर से ऐड कर लें क्या एक बार, लेट मी ऐड. ओके, सो इट इज 2188.49. ओके, तो दिस इज किलो जूल पर मोल. You understood? Now what with the 24 mg of magnesium. 24 mg यानी इसको माइक्रोग्राम को बनाना पड़ेगा हमें, सॉरी मिलीग्राम को बनाना पड़ेगा ग्राम. सो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे. ओके, तो हाउ मेनी मोल्स आर देयर, नंबर ऑफ मोल्स of 24 mg magnesium. Small m upon capital M. What is our small m given? 24 mg को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बिकम ग्राम. और मैग्नीशियम का मास कितना होता है बेटा? 24. ठीक है, सो इट विल बी 10⁻³ मोल. मैग्नीशियम का मास क्या है? 24. And small m given 24 mg. mg is converted into gram. Okay. So 24 cancel. 10⁻³ moles. So amount of energy, therefore, ये 1 मोल के लिए इतनी एनर्जी है, तो 10⁻³ मोल के लिए how much? So for 1 mole, 2188.49 kilojoule. ये 9 है, हाँ, किलो जूल एनर्जी नीडेड. सो फॉर 10⁻³ मोल्स, हाउ मच? 2188.49 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³. सो इट विल बिकम, ये नीचे 2 जीरो आएंगे और ये नीचे 3 जीरो पहले से है. सो इट विल बिकम, आंसर विल बी 2.188 किलोजूल पर मोल. किलोजूल पर मोल लिखने की जरूरत नहीं है. फॉर दिस इतनी एनर्जी की जरूरत है. अंडरस्टूड? सो टुडेज रिवीजन इज ओवर. टुमारो आई विल टेल यू फॉर द मोर न्यू थिंग्स.